The future of transportation is being built right now by someone who's transforming the game. Meet Mr. Uday Narang, the visionary leading Omega Seiki mobility. His bold mission to make India a global leader in electric vehicles. Discover how he's revolutionizing logistics and tackling sustainability with cutting-edge technology. From India to the world. So starting off with the questions, how did you start your career and what was that point when you realized कि नहीं मेरे को automotive sector में कुछ करना है? Because natively you weren't in this sector. How did that shift happen? Look, I spent 30 years between US and Europe, and I was one of the world's biggest commodity trader. And I worked on Wall Street. Then I moved over to London. I was one of the bigger players on the metals exchange, deregulation of electricity, carbon credits, all of that. But Okay. I'll tell you what, I was sitting in my office in Mount Street, which in London is called Hedge Fund Alley. And I said, you know what, 24/7, working in front of screens, but I want to make a change. Okay. I want to make a change, and how do I do it? And I think I was studying up on green energy and sustainability, specifically, not just in Europe and the United States, but more aware in India, in Asia, in Africa, in Latin America, where the millions and billions of people live that need a change. And I want to make a change. I think, that was the time when I thought, okay, it's time to finish up with my financial and my Wall Street career and come and make a change. And I chose a location coming back to India. And I'll tell you what, there's been a lot of ups and downs, but I've never regretted it that day. Superb. So once you have decided कि okay India आऊँगा, EV में business करूँगा, why did you choose the commercial vehicle segments? Because you came back in 2018 में आपने start किया था. 2018 two-wheelers were a much hotter segment. What made you get into the commercial side of things? Look, the biggest amount of emitters of pollution are commercial vehicles, right? And if I come back to the core of what I wanted to do, I wanted to make a change. I wanted to make a part of this future of this country. I wanted to say, what do we focus on? See, right from the beginning, my vision was not just to do a round A, B, C, D and make a lot of money and not think about it. There's a lot of people out there. I don't mind. They do that. It's fine. Okay. But I'll tell you what, I wanted to make a change, and I thought commercial vehicles was the most important part. Two-wheeler, cargo, three-wheeler. This country has a massive amount of passenger and cargo three-wheelers, e-trucks. So my focus right up has been on commercial. Obviously, as we've gone on this journey, as we've built products, as we've built OSM, and as the whole ecosystem is built. For me, again and again, it was about building the ecosystem. And I think the commercial was something that would have got the TCO model, which is the total cost ownership model. It would have been able to give that. We were continually working on that. And I thought this is something that will give the bang for the buck. Obviously, when I started drawing on a blank canvas, I didn't see this where it was. But then, it was the Prime Minister Modi ji, it was Transport Minister Gadkari ji, it was every chief minister. And you know what? As the wind blows on a boat in the middle of the ocean, as the wind came, I just kept going on. Not only me, in this journey, many, many people have come in because they understand not just the politicians, not just the bureaucrats, but even all the big businessmen. And obviously, environmentalists, everybody knows this is what is needed. Future for you and your kids. We've got to make a change. Okay, so moving on to the next question. आप इंडिया आ गए, OSM setup हो गया, you've realized कि ठीक है commercial vehicles is the thing to do. Take me through the journey of starting up to getting out the first vehicle, the first prototype. What were the difficulties you faced? पता नहीं काफ़ी सारी problems आती हैं when you're making the first prototype. And how did you decide on the first product जो निकलना था? Obviously, we started in 2018 with the company, but उससे भी 3-4 साल पहले, we were doing R&D, we were testing, we were looking at vehicles. We saw उस टाइम पे चाइना से लोग माल लगा के गाड़ियां बना रहे थे. हमने उसी टाइम सोचा था कि जब हमने ये गाड़ियां बनाने की सोची थी, तभी बोला था कि सब कुछ इंडिया में बनेगा. सिवाय सेल से हम कुछ भी कहीं से नहीं मंगाएंगे. And you know what? बहुत सारी डिफिकल्टी तब था. पावर ट्रेन्स, बैटरी इंटीग्रेशन, मोटर्स, कुछ भी नहीं था. Right? It was a dream कि let's build a product, let's build the right product, and we'll see the scale. As I said to you, हमें नहीं पता था कि मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना काम.
you know, the budget allotted on day one for this project back then, मैं हंसता हूँ अभी, was about $100,000, which Okay. is like at that time 70 lakhs, right? We had given a project, prototype के 70 लाख में इसको prototype बनाओ और करो. अब तो मुझे लगता है every day, मतलब 70 लाख की तो बात ही छोड़ो. I thought, you know, 20, 25, 50 करोड़ में काम बन जाएगा. अब तो 5,000 करोड़ भी इसके इस इंडस्ट्री में small नजर आते हैं. So look, I think the journey has been where we continuously built products, we tested the market, we continually went to the customer feedback. इसका continuous understanding कि market को क्या चाहिए. हमने गाड़ियां शुरू की कार्गो में उस टाइम चाहिए था 100 CFT, फिर 120 CFT, फिर 150, फिर 170. मतलब everything continually changes. It changes so fast. It's like Zara. New products, new design daily, right? So the customer is continually changing. The needs of the customer are continually changing. Look, ये एक marathon है, ये sprint नहीं है. Okay. And I think मेरी view ये है, मैं आज next 50 years EV, hydrogen, alternate energy, कुछ भी होगा, hybrid, we will continually build. Okay. The core of my continuous businesses, I want to make India cleaner and greener. I want to make sure that we have a country where your kids live. You know, the 31 of the most polluted cities in the world is in India. And we've got to make a change. We've got to owe it. मैं ना बार-बार सोचता हूँ, हमारी फ्रंट लाइन में जो लोग काम करते हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी क्या तनख्वाह है, but they are willing to take a bullet for our country कि आप और मैम और सब घर में आराम से सो सके. लेकिन अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ काम करना है. So I don't know. मैं अपने को, मेरी और मेरी टीम is dedicated to building this. Now, where if somebody builds a better product than us, तो हमें better product बनाना पड़ेगा. और अगर हम better product बनाएंगे तो कोई और better product बनाएगा. उसमें जीत किसकी होगी? जीत होगी consumer की, right? And ये एक मेरा main goal है. And look, OSM is here for the long haul. I own majority of the company. We have put a significant amount of capital and we'll continue to do that. And I'll tell you, we have the largest amount of products in AR/AI CAD. I can tell you the number of products in fixed, fast charging, swap. बहुत कुछ कर रहे हैं. 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheelers coming out very soon. मैंने लेके आया था लेकिन कॉस्टिंग के चक्कर में फिर से करना पड़ा. Because FAME subsidy अभी आई है, but it's changed. So TCO model बनाने के लिए हम continuously R&D कर रहे हैं. Not just here. I just tested in the Nordic region. I was in -25. I just came back day before yesterday from the deserts of Abu Dhabi. So testing, R&D, continuous investment, building products, and completely understanding what the customer wants again and again and again. मैं रात को कभी ड्राइवर्स के साथ बैठता हूँ, कभी मैं हब्स पे जाता हूँ, कभी मैं स्वैप चार्जिंग को देखता हूँ, कभी मैं फास्ट चार्जिंग को देखता हूँ. Look, ये मेरे लिए एक मिशन है. I call it Mission Impossible. But Mission Impossible को possible करने के लिए, you know, I am an OSM, and I would hope I'm also seeing the entire ecosystem being built. So I think काम हो रहा है, और भी काम करना है. मैं ये नहीं चाहूंगा कि सिर्फ मोदी जी इस कंट्री को क्लीन करें. हमारा भी कर्तव्य बनता है इसको क्लीन करने का. True. Okay. And also when you were talking about the R&D side of things, you told कि everything apart from batteries was... Cells. Okay, cells. The batteries were also India. We lined up back then with my good friend at Exicom, Nataji, who owns that. Exicom's a very, very old company, been building state-of-the-art batteries. So we aligned forces with them. But then as we grew, we continued to align forces with multiple other players. Okay. But the battery is one of the most expensive part for any commercial vehicle. Abhi aajkal a new model has come in that is battery as a service. How do you see that impacting things? Look, 30% of the cost is, 30% of the cost is the battery, right? And obviously, back then when we first started, the cell prices were, almost $200 a kilowatt hour. Okay. I can tell you today, I was in Thailand about 2-3 weeks ago with the CATL head. CATL builds one of the best batteries in the world. CATL, BYD. They're Chinese, but they still build the best batteries. Okay. And they know the price. वो कहते हैं ना आटे दाल का price. The cell prices today are below $45 a kilowatt hour. So the price has dropped
1/4. Now, battery as a service will reduce the cost. So the TCO model will also help. See, we have to look at, in England we say different horses for different courses. कोई घोड़ों को ग्रास में रन करने की कोशिश है, कोई मट्टी में भागते हैं, कोई किसी में. So India is a very diverse market. We will give different products, but I think battery as a service will help reduce cost, will also give a better TCO model, and I think in our country where pricing is very sensitive, will help promotion of EVs and alternate and green energy. So I think anything that helps the ecosystem, I'm very happy to be part of. Okay, but do you think battery as a service has a real application apart from the commercial side of things? Will India as a consumer, as a daily consumer, accept battery as a service? Because उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि there is a mental thing कि अच्छा गाड़ी मेरी है लेकिन बैटरी नहीं. So do you think Indians will accept this factor? I'll tell you what. मैं तो मेरी तो काफी एज है, आप तो यंग हैं. हाँ. तो आपकी जो कंजम्पशन हैबिट है या किसी और की जो यंगस्टर्स की कंजम्पशन हैबिट है, बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है इस कंट्री में. आप प्लीज 2 चीजें, यंगस्टर और नारी शक्ति. नारी शक्ति 48% है. आज की डेट में जो थॉट प्रोसेस है न्यू जनरेशन का, न्यू डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट्स, आप किया को देखो क्या, और हुंडई को देखिए, हुंडई कैसे कैसे प्रोडक्ट बना रहा है. सो माय आंसर इज इंडिया इज अप फॉर अ चेंज, इंडिया इज अप फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. हमारे जो पेरेंट्स थे, उनकी जनरेशन और मेरी जनरेशन के बाद आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन जी, कुछ भी बोलो उनको, जनरेशन क्रेजी बोलो, हाँ. उनकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है. ना गाड़ी ओन करना चाहते हैं, ना किसी को वो उबर यूज करना चाहते हैं या ब्लू स्मार्ट यूज करना चाहते हैं. सो आई थिंक द फ्यूचर, देखिए, 65, a very, very large part of our population is under age of 35. And I'll tell you, change आ रहा है. ये भारत, ये नया भारत है. देखिए, मैं तो चाहूंगा इस देश को हम सुनहरी चिड़िया बोले या कुछ बोले, we're gonna be the 3rd largest economy, we're gonna be, the 3rd largest equity market, and I'll tell you, change is coming. And I think Indians accept it, and I think you and your generations below, beta, they're changing everything. And I think that's what gives me that energy, that's what gives me the power to make a change. And I'll tell you what, OSM इसी पे बना है कि हमको चेंज लाना है. क्या है, गिर गए, फेलियर से डर नहीं लगता. वो क्या, वो है कि वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि बाबूजी थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से. चेंज से डर नहीं लगता है मुझे डर लगता है कि चेंज, और जो यंगर जनरेशन है वो लॉन्ग टर्म सोचे. ठीक है, ये एक बात है. और मैं कह रहा हूं, इंडिया इज अप फॉर अ चेंज. मैं तो चाहूंगा कि इस कंट्री में डिसरप्शन, चेंज, और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे सत्य नडेलास और सुंदर पिचाई बाहर नहीं जाएं, कंपनियां यहां बनाएं. मैं चाहूंगा आप जैसे लोग इस पूरी कंट्री को चेंज करने के लिए इसमें सो चेंज इज गुड, फेलियर इज गुड बिकॉज यू लर्न फ्रॉम इट. मैं तो हर रोज ही देखता हूं, गिरकर अगर मैं गिरा ही नहीं तो उठूंगा कैसे. तो चेंज भी वैसा ही. ओके, आपने बहुत फेलियर के बारे में बात किया. सो सिंस यू हैव बीन बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच इन अ वे, or the EV industry in itself is very new. You must have gone through a lot of failures. Take me through one of them and what did you learn from it? और उसको फिर वापस एकदम स्पीड में कैसे लौटे? देखिए, फेलियर तो अपनी जिंदगी में पार्ट एंड पार्सल है. मैं आपको ये बताऊं, गिरना तो मेरे को, मतलब अब मेरी उम्र 55 की हो गई है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आपको, गिरने के लिए तो एवरीडे कोई एज नहीं होती, लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होती. तो देखिए, इन दिस जर्नी आई हैव हैड many successes, we've had many failures. इतने नए प्रोडक्ट्स निकालता हूँ, कई बार बैटरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता हूँ, लेकिन क्या है, जैसे हमने एक टाइम पे एक फास्ट चार्जिंग में एक छोटी किलोवाट की बैटरी निकाली जस्ट टू सी कि उसकी कॉस्ट सस्ती थी बट उसमें साइकिल्स लंबी थी. वो नहीं सक्सेस हुआ. We made sure that product got better range, got a better gradient. So look, multiple areas we've come up with products where we test the market and we say, this is good. If it's not good, we come back, we make sure the customer has to be satisfied. So we are always out there that the customer needs to be looked after. I don't want a product where I know, आज का मौसम है, one of the two-wheeler companies are getting hammered. ठीक है, गलती हुई, लेकिन मैं देखूंगा कि वो गलती करके कितनी जल्दी उसको चेंज करेगा. राइट. सो हमारे से भी कई बार गलतियां हुई,
लेकिन अब क्या है, बहुत कुछ सीख लिया है, कस्टमर को क्या चाहिए समझ आता है, लेकिन हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहता है मुझे एक्स्ट्रा लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, मुझे बेटर ग्रेडियंट चाहिए. कस्टमर satisfaction in India is the highest. Customer payment capabilities are the lowest. So everybody wants a BMW at a price of a Suzuki 800. So that's the catch. So we continually are working on that. कई बार चीजें आती हैं, उसको चेंज करते, लेकिन चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो everything is never 100% perfect. So that's part and parcel of learning. अगर बच्चा गिरेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा कि चलना है. सो देखिए, OSM में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जहां हमने हमने फेलियर्स लिए, लेकिन उसको सीख के कितनी जल्दी रीबाउंड किया. सी आई थिंक द बिगेस्ट लेसन इन दिस थिंग इज, आपको कोई फॉल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो, रेज योर हैंड, रिकॉल द प्रोडक्ट, कंटिन्यूली गो एंड satisfy the customer, learn from it and keep going. मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बजाज, महिंद्रा, टाटा एक दिन में नहीं बने, बहुत कुछ सीखा है. टेस्ला रिकॉल करता है गाड़ियां, राइट? टेस्ला, इलॉन इज समबडी हु आई रिस्पेक्ट अ लॉट. इंडिया में हर बंदा ही सोचता है मैं इलॉन हूं. इलॉन बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है? हमारे इंडिया में हर दूसरा बंदा कहता है मैं तो इलॉन का बाप हूं. ऐसा इतना आसान नहीं है, ठीक है? इलॉन ने बहुत धक्के खाए हैं, रॉकेट्स फेल हुए हैं. तो मैं ये बोलूंगा, देखिए, कस्टमर की सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, सेफ्टी सोचिए. वन लाइफ लॉस्ट इज टू मेनी, वन एक्सीडेंट इज टू मेनी. और राउंड ABCD की सोचिए, लेकिन जब तक कस्टमर की नहीं सोचोगे, ABCD का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिजनेसेस, वी आर बिल्डिंग ओमेगा. आज 55 साल हो गए इस कंट्री में, और सोच रहा हूं आज 55 का हो तो मे भी 55 साल और रह गए हैं. तो फ्रंट लाइन में इसको काम करने में, इस स्पेस में, और मैं ये सोचूंगा कि जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचेगा वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा. ओके. ऑल्सो जब आपने OSM स्टार्ट किया था, यू डिडंट रियली हैव अ बैकग्राउंड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना? हाउ डिड यू गो अबाउट building a dealership network? What did you sell them eventually, like in the start? Because maybe you didn't have a product, maybe you just sold them a story. What was it? देखिए, हम बहुत ही ग्राउंड के आदमी हैं. हम ग्राउंड पे ही रहते हैं. आप मतलब कस्टमर के पास जाना, आपको क्या बोलूं, कई बार रात को जाता हूं ड्राइवर्स के साथ, कभी ड्रिंक भी ले लेता हूं. सॉरी इफ एनीबॉडी इज ऑब्जेक्टेड विद दैट, बट कभी मैं उनके साथ खाना खाता हूं, उनसे फीडबैक लेता हूं. देखिए, मैंने ये जर्नी राउंड ABCD के लिए नहीं ली थी. मैंने ये जर्नी इंडिया के लिए ली थी. और आई डोंट नो, आई लेफ्ट एंड आई वेंट इंडिया व्हेन आई वाज 17 or 18. फॉर मी दिस इज मिशन. मुझे कुछ और करना है. मुझे सिर्फ, देखिए, पैसे, कंपनियां बनेगी अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर एक आप कस्टमर को हैप्पी रखोगे तो पैसे तो आएंगे. इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. तो मैंने ये लेसन इसमें, ये पूरी जर्नी में यही सोचा है समटाइम्स कि मैं क्या चेंज ला सकता हूँ. मैं डीलर्स के पास गया, उन्होंने कहा क्या हो, ओमेगा सेकी का नाम भी क्या है, उनको समझ ही नहीं आता था ये सेकी क्या है. आप चाइनीज तो नहीं हो. मैंने कहा सेकी तो जापानीज है. तो क्या था, कंटिन्यूअसली, I don't know, I'm a fighter. You knock me down, Muhammad Ali is somebody I look up to, and you knock me down, I'll come back. No, no, no. People can keep saying no. I keep knocking on your door. I keep coming up with a better product. I keep talking about my story. I keep dancing. I keep get better. And I ain't going to go away. And I'm never going to go away because I'm fighting for a cause. I'm not fighting for money, right? True. If you're an employee of a company, and if you're fighting for just a salary, well, then it's a different perspective. I'm telling you, in my company, all of the people that are here who are staying long, they believe in it. They would fight for it. I have a team of people all across R&D, production, digital media, PR, service. The men and women of this company, they're like my children, right? And so, मैं फिर बोल रहा हूँ, फेलियर से डर नहीं लगता. जब फेलियर से डर नहीं लगता, एक मिनट, जब मुझे गोली लगने से डर नहीं लगता, तो क्या डरूंगा? तो I kept going back to people, to customers, and OSM has been about that. New technology, 15-minute fast charging. आज की डेट में 15-minute fast charging, आप एक एवरेज जो EV पैसेंजर है, 120 किलोमीटर चलती है, 120 के महीने में 3,500 से ऊपर नहीं चलती. स्ट्रीम सिटी क्विक
6,500 7,000 किलोमीटर क्लॉक कर रही है, उससे टीसीओ मोड़ लाएगा, उसकी अर्निंग्स आएंगी, अब तक कर दूंगा ना, उसके साथ कोई अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा, मैं आपके लिए इतने मल्टीपल प्रोडक्ट लगा रहा हूं नॉन स्टॉप, राइट? और अगर मेरी एनर्जी को मैच कर सकते हो तो किसी दिन भी अखाड़े में आ जाओ, 24 घंटे रेडी। ओके, तो एज अ कंपनी आपकी एनर्जी अलोन वुड नॉट मेक द मैक्सिमम इम्पैक्ट, राइट? बिल्कुल ठीक है। एज अ लीडर हाउ डू यू एंश्योर कि आपकी जो टीम है उसमें भी ये एनर्जी आए, उसमें भी ये ड्राइव आए कि इस कॉज के लिए काम करना है? व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल और व्हाट इज योर लर्निंग इन दिस जर्नी? बहुत कुछ लर्न किया। I'll tell you about the leadership type later. मेरी लर्निंग ये है कि give an environment to an employee. आपको मोटिवेशन तब मिलेगी जब आपको लगेगा कि आप 3-4 चीजें। नंबर 1, एम्प्लॉई को चाहिए इज्जत। They need to feel that they are somebody who will be respected. Number 2, financial. Number 3, growth. Number 4, ownership of the company. Right? If you believe that you own this, I'll tell you, you'll give your life for it. So my leadership role is to give all of the companies that I work, all the people that work in our companies, they are able to feel they own it. Failure or a sort of a move that is wrong is not said as a disrespect. It's said, okay, learn from it, come back. So I want to create an environment. Some people say, we're running Omega Steel for 55 years. A lot of the other employees say, it's like a playground. Yeah, jiska dil karta hai, they can play, they get a canvas. But mere view mein, मेरे को employees को एक ऐसा environment देना है जो कि मेरा turnover आज की डेट में मैं देख रहा हूं ईवी कंपनीज में 30, 40, 50, मेरी कंपनी में 5 से 8% भी टर्नओवर नहीं होगा। मैं वो इन्वायरमेंट देता हूं, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा तो आई विल ऑल्सो प्रमोट कि आपको एक फ्यूचर मिले। मैं आपको नहीं बता सकता कितने लोग मेरे से इस जर्नी में जाके वो 5% में वापस आए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरा पुणे का प्रोडक्शन हेड मेरे साथ काम करके एक बहुत बड़ी कंपनी में जाके फिर वापस आया है और ऐसा काम कर रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला दशहरा तेरे साथ मनाऊंगा फैक्ट्री में, तो संडे, सैटरडे और संडे उसके साथ होगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, आई गिव दैट एम्प्लॉई अ सेंस ऑफ ओनरशिप। ये जो कंटिन्यूअस, और वो मेरे बच्चे हैं, दे आर माय फैमिली, उनके दर्द, उनके बर्थडे, उनकी प्रॉब्लम्स आर माय प्रॉब्लम्स। दैट्स हाउ आई वर्क। नाउ the other question was afterwards you said about employees, and what was the other question? The learnings and the learnings have been many. The learnings is not every employee is going to be, no matter what you give, okay? But you have to make sure that the criteria to bring people, I have maybe not hired the most talented people in the country to work for me, but I've asked the most dedicated. They will take a bullet for me when the army or the enemy is against me, right? Okay. So that's the kind of thing. And I'll tell you what, this journey is a 50-year journey for me. I don't know how many people you've interviewed will say, I'm in this for the long haul. उनको तो ये चाहिए कि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करूं और निकलूं। भाई, मैं आज की डेट में मैं चाहूंगा कि जब मैं ना भी हूं, मेरा एक इतिहास में ये लिखा हो कि हमने कुछ चेंज ला इस कंट्री में। So I'm saying, look, that does not mean that we don't need to grow, we don't need money. I'm putting so much money into this business, right? A lot of my employees think, this guy's mad. My mother thinks I'm mad. Okay. But madness तो चाहिए ना यार। अगर madness नहीं होगी तो 55 साल में मेरा घर स्विट्जरलैंड में है, वहां पे जन्नत है भाई, और यहाँ 900 AQI होने वाला है शॉर्ट रन, ठीक है? तो मैं ये इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ की हवा खानी, मुझे चेंज लाना है। और मैंने लर्निंग ये ली है कि अगर आप 80% of the employees को भी खुश रखो, and they are with your team, so I think you've got a success on your hand. Okay. But to make an impact on India, जो real India है वो आज भी tier 2, tier 3 में है. How are you planning to penetrate into the rural India? What more do you need from the side of government, and what more do you need on sides of innovation? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि at this moment, I would say I am focused on tier 2, 3, 4 cities. ये मेरा सबसे बड़ा गोल है. Okay, we're in Delhi, Bangalore, Chennai, but India, बहुत अच्छा point बोला आपने, lives in tier 2, 3, 4. So continuous products, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2, 3, 4, and मेरा target दो चीजें हैं, rural India and women in this business. How can they get better on it? So
I have an L3 company. I have an L5 cargo passenger, 3-wheelers. We've got 2-wheelers. We've got 4-wheelers. We've got, products coming with fixed fast charging swap. मैं इतनी choice दे रहा हूँ और मैं इतना ecosystem. अगर रूरल इंडिया में आज swap नहीं लगेगा क्योंकि swap station नहीं है, फास्ट चार्जिंग की जहां है वहां लगाओ, फिक्स बैटरीज लगाओ, रेंज दो. मैंने इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज पहले अभी किसी ने बोला, बट मैंने रेंज प्लस एक 250 किलोमीटर के लिए विक्टोर बनाई जो कि 250 किलोमीटर कर सकती है. मैं अभी नए प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ. सो मैं टीयर 2, 3, 4 सिटीज सबसे बड़ा एजेंडा मेरी 200 डीलरशिप. उसके बाद जो सारी नेक्स्ट ऑलरेडी उसमें से 80 टीयर 2, 3, 4 में, नेक्स्ट 150 आर गोना बी इन 3 and 4. सो गेटिंग द रीच. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा टेंडर उठाया है. टेंडर से मेरे को each part of rural Maharashtra will be touched by OSM, service, dealerships, like this, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Kerala, Karnataka. मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला ब्रदर. मैं OSM का झंडा हर जगह. लेकिन ये OSM की गेम नहीं है, ये सारी इकोसिस्टम बिल्डिंग की है और कम्युनिटी बिल्डिंग की है. आपने बात किया कि वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट OSM really believes in. What are the steps you're taking कि अच्छा वुमेन इंडिया में, रूरल इंडिया में घरों के बाहर आए? What have you done for that? First of all, in my factories at Omega and OSM, we made a commitment by 2035, 50% of the workers are going to be women. Not just because they're women. I'll tell you what, they are better workers, they are more focused. हमारे जो लड़के इधर उधर ध्यान रखते हैं, जो मैम आती है वो काम करती है, they know they have another job to do when they go home. We are working in our R&D sector. We are also making sure that if there are whatever programs all across this country, नारी शक्ति में जो है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हो. उन प्रोग्राम्स में अगर मुझे CSR करना है, उसमें अगर हमने काम करना है, उसमें हमें एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है जो वुमेन के लिए बेटर होगा, उस सब में OSM का हाथ है. मैं रीच आउट करूंगा आपके सारे दर्शकों को, जिसको भी वुमेन ड्राइवर को, वुमेन एंटरप्रेन्योर को इस एरिया में घुसना है, रीच आउट टू मी थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और थ्रू यू, and we'll reach out to them and we'll try to either help them ourselves or we'll be able to do. We're also working on something very revolutionary in the agriculture sector. I've been told by my team not to talk too much about all those products, but there's multiple things going on in the agriculture sector, products for the agriculture sector. Okay. Also, now to sum up things, one message to the viewer for anyone who is planning on to get into the clean energy space, what would it be? I have one message. Please make sure that you have a long-term vision. पैसे आपको मिल जाएंगे. आप देखते हो, मैं कहता हूं, आज भावेश को देख के सब भावेश बनना चाहते हैं. भावेश बन सकते हो, बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते, भावेश से बेटर भी बन सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रखो. और एथर भी है और बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं. मेरी विजन ये है, लॉन्ग टर्म रखिए और कस्टमर की सोचिए. कस्टमर भगवान है और कस्टमर सोचेगा, अच्छा सोचेगा तो बिजनेस बनेगा. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचो. ये ऑटोमोटिव बिजनेस है, इसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ मैटर करती है और वो आपकी सिस्टर, मेरी मदर, आपका ब्रदर हो सकता है. एंड एक और बात, अगर आप सच्चे दिमाग से लॉन्ग टर्म सोचोगे, सक्सेस मिलेगी. ये कंट्री बहुत अच्छी जगह पे है. द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. और मैं बता रहा हूं, जय हिंद जय भारत नहीं, भारत की तो सुनहरी चिड़िया बनने का चांस 100% है. थैंक यू वेरी मच.